Hello friends, in this video we'll try to simulate the structure from one of the IEEE conference paper. It is inverted F quad band antenna. So you can have a look at the paper. So this is the paper from which we'll simulate the structure and verify it with the results which are published in the paper. So this is what the inverted F antenna, which is resonate at 2.45 and 5.26 gigahertz. So I have copied the dimensions from the paper and same is here as in pen figure. So this is the diagram that I'm going to draw a structure in HFSS and then I'm going to simulate it. So let's have a look at this diagram. So this will be sub Y and sub X. So this will be the ground plane whose dimensions are sub Y and GX. So the thickness of this microstrip line is Fy. Then this length, vertical length is Fx. The two legs of this F antenna are, this is F1Y and this is F2Y. Whereas this thickness is again Fy. So we'll start with the simulation. When you open the HFSS, you will get this window. So start with structure drawing. We can click on file, then click on new. You will get the project here. Click on the project and click on insert HFSS design from here, or you can go to the project menu and then insert HFSS design. Single click. So you'll get this window. Then organize the window as per your comfort. I feel comfortable in XY plane, so I'll rotate it accordingly. So this is the plane which I prefer because I have dimensions in Y and X. So initially I will draw the substrate. To draw the substrate, I will click on box, draw box. First click, move in the direction of arrows. Second click, move in upward direction. Third click. So now box is ready, right? Then to create the box, I will click on create box. I'll put the dimensions as 0, 0, 0. This is X size. So in X size we have sub X. So this is what the substrate X length, which is 40 mm, and sub Y is 35 mm. So accordingly I will put the dimensions. So sub X is equal to, it's 40 mm. Then Y sub Y equal to 35 mm, and Z is equal to H, that is 1.6 mm, which is substrate thickness. अगर डायमेंशन देते समय कोई गलती हो जाता है तो भी कोई डरने का नीड नहीं है यहाँ पे, because we can correct it easily. Then I click on OK. जैसे OK पे क्लिक करता हूँ मैं, you can see it will get aligned on 0, 0, 0. Right? Then I click on fit to all. So आप देख सकते हो यहाँ पे substrate align हो गया है. Now I'll modify the structure as per my needs. So I'll click on the box. I will rename it as substrate. I will edit the material. Edit. Then it is FR4 material. So I'll click on FR4 and then I will say OK. Then I will edit the color. I will click on edit. I will give the light color. I will say OK. Then transparency, I will keep this as 0.6. Then I will say OK. Then OK. So my substrate is ready now. So this is what my substrate, which is 40 mm by 35 mm. So आप rotate करके उसको देख सकते हो. Now I want to draw the ground plane. So I'll click on rectangle. Single click. Move the mouse in the direction of arrows. Click. Now the rectangle is ready. I'll create the rectangle by clicking on this. I'll click on this. In the direction of Y, it is sub Y. So no need to give the values of that. Then in sub X, I think we have given some directions. In sub X, it is GX. So GX is equal to 14.4 mm. So I will make this as GX is 14.4 mm. Then I will say OK.
then I will align it at 0, 0, 0 by default. Then I will say OK. आप देख सकते हो now the ground plane is there, which is at the bottom side. Right. But now what I want, as per my structure, I want to move this ground plane from the upper end to the lower end. So for that I need to modify the locations, coordinates. So in the x directions I will move it by sub x. If I move it by sub x, it will be going out from the substrate. So now इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा जितना substrate का लेंथ है. So I'll subtract that minus gx from it, minus gx. Then I'll click on OK. Now see, this is what the desired structure which I want. I'll click on rectangle. I will rename this as ground. I'll edit the color. I'll give some dark color and then say OK. I'll change the transparency to 0.2, which should not be more transparent compared to the substrate. Then OK. I will say OK. अभी आप देख सकते हो मेरा substrate और ground plane ready हो गया है. On this ground plane and substrate, I want to create a patch. Right? So see, the ground plane is at the bottom side. So now we need to draw a patch on substrate. So this F type figure we are going to draw. So again we can draw the three rectangles, 1, 2 and 3, and accordingly we can place them. So I will go to the HFSS again. I will draw first rectangle, single click, a second click. Rectangle ready हो गया है. Right? I will click on rectangle. I will give the coordinates as 0, 0, 0. Now I know this is what this length is Fy. So in y direction it is Fy. Fy is 3 mm. I'll say OK. Then in x directions it is Fx. So in x direction it is Fx. Fx is equal to this 14.4 plus 16.6 plus 3 mm, that comes out to be 34 mm. So I'll give this as 34 mm. Then I'll say OK. So you can see the substrate is aligned here, but it is at the downside. So I need to take it at the upper one. So I will change this coordinate, z coordinate to h. So your patch will come out at a height of h. See, already it is come out, right? So if I rotate it, you can check it has already shifted to the upper plane, right? Now next is to create this. I need to start it from here. So what to do? Here we can give the x dimensions as sub x, as we did in previous case. So it will come out from the substrate, then minus the length of the rectangle, that is minus fx. So it will get aligned. Now if I rotate, you can check it is fitting at this particular point. So now what to do? We need to take it at the center. So very simple formula. We need to play with now y dimensions. So how to do? This is what sub y minus the thickness of this is Fy divided by 2. It's very simple. You can check. Once I click, it will align at the center. Wow, great, right? So it is there aligned. So this is very simple. It needs only a practice. If you practice it, if you play with the buttons, it's very simple, right? So I will draw another leg, which is on the upper leg. So for that I need to draw again a rectangle, single click, second click. Rectangle ready हो गया. Create rectangle. I will align it at 0, 0, 0. Right? अभी जो इसका thickness है rectangle का वो x direction में है. So I will make this as thickness is equal to Fy, जो 3 mm है. I will click OK. Then
उसका y साइज मतलब इसका लेंथ f1y जो हम लोगों ने दिया है, f1y is 10 mm. So f1y, I will say okay, then this is 10 mm, click on OK. तो आप देख सकते हो जैसे ओके क्लिक करूंगा मैं, ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया है, बट इट इज एट द बॉटम साइड. वी नीड टू टेक इट एट द हाइट ऑफ h. सो विल चेंज द डायमेंशन ऑफ z प्लेन, दैट विल बिकम h. सो ऊपर आ गया है. अभी इसको ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाके उसको मुझे ओवरलैप करना है, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट्स पे उसको मुझे लेके जाना है. सो इट्स वेरी सिंपल. पहले उसको यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, फिर हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं. चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ सब x पे, सॉरी ये सब x पे लेके आता हूँ. ये जीरो नहीं आना चाहिए यहाँ पे. आई विल से ओके. तो नीचे आ गया. मुझे इसको ऊपर लेके जाना है एट द डायमेंशन ऑफ सब x. सो नॉट सब x, माइनस एफ एक्स. तो इसको माइनस एफ एक्स करता हूँ तो ऊपर चला जाएगा. ओ चला गया, देखिए ऊपर चला गया. अभी ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट मुझे देखना है. तो ये वाला पॉइंट मेरा है सब y, सब y माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाय 2. क्लिक ऑन ओके. देखिए ये मैच हो गया इसके ऊपर. सिमिलरली अभी मुझे जो सेकंड लेग है मतलब f2 पाई वाला, उसको ड्रॉ करना है. सो विल ड्रॉ इट लाइक दिस. क्लिक, सिंगल क्लिक, देन सेकंड क्लिक. रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा. क्लिक ऑन दिस क्रिएट रेक्टेंगल. सेम 0, 0, 0 करना है. देन x डायरेक्शन में ये fy है, y साइज मेरा f2y है. f2y का डायमेंशंस है 5.35 प्लस 3 मतलब 8.35. 8.35. देन आई विल से ओके. देन ओके. तो ये आ गया है. देन क्लिक ऑन दिस क्रिएट रेक्टेंगल. you'll get this dimensions at 0, 0. then click on sub x. when we click on sub x, ये वाला डायमेंशन नीचे आ जाएगा. अभी मुझे क्या करना है, इसको ये वाला हाइट पे लेके जाना है. मतलब ये जो gx का हाइट था और ऊपर से जो मैंने दूसरा एक हाइट जो डिफाइन किया हुआ है, ये वाला हाइट मतलब 10.6 मतलब fg. चलो हम लोग उसको माइनस करते हैं. फिर सब x माइनस gx, देख सकते हैं आप ये ऊपर आ गया है, राइट. अभी उसमें से क्या माइनस करना है मुझे, फिर से मुझे माइनस करना है उसमें से 10.6 mm मतलब fg. सो क्रिएट रेक्टेंगल माइनस fg. fg है मेरा 10.6 mm. तो अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया है, राइट. लेकिन अभी हम लोगों ने जैसे माइनस करते गए हम लोग, तो मेरा सबस्ट्रैक्ट पहले यहाँ पे आ गया. जैसे मैंने 10.6 किया तो वो यहाँ पे आ गया. अभी इतना वाला fy जो है वो मुझे फिर से माइनस करना पड़ेगा. सो आई विल अगेन सबस्ट्रैक्ट fy फ्रॉम दिस. सो आप देख सकते हैं अभी ये ऊपर आ गया है, राइट. नाउ इसको सेंटर में लाने के लिए सेम फॉर्मूला जो ऊपर यूज किया था हम लोगों ने, दैट वी कैन यूज, दैट इज सब y माइनस fy डिवाइडेड बाय 2. क्लिक ऑन ओके. सो दैट विल अलाइन. वाओ, you can see now it is aligned, but I think it is at the bottom side. So we need to take it at the upper level. I think we have not given the z value. Yeah, yes, right. So we can click on here, create rectangle. This is, we need to take it at a height of h. Then comma is missing, comma h. Then I'll say okay. Now we can see the f structure is now ready, right. Now we can do one thing. If I calculate the distance or the distance between these two legs, it is coming out somewhere around
3 mm, right? So 34 minus distance from this to this, and then minus 3 mm. So this comes out to be nearly 3 mm, right? So we'll check 3 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है, right? So जैसे मैंने आपको बोला था, you can measure it with the help of this. So I'll measure with the help of position. You can click here and सिर्फ वो वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे लाके रखना है, and then we can see it in distance is equal to 3.28. Here you will show the distance. आप देख सकते हो. So distance मुझे दिख रहा है 3.28. It means our structure is ready and correct. Right. Now I will just magnify it and align it as per comfortable view. Right. Now we can combine all these three rectangles. So for that, press the control key, click on rectangle first, second and third. So F figure is highlighted, click on combine or unite. So the structure is united. So now single rectangle is ready now. This is one. So click on this, rename it this as patch, edit color as a green or color of your choice. Click on this. We can take this variable value as 0.2, then click on OK. Good. Now check, you can check the structure which we want. The same structure is now ready. Only thing is we need to assign now the input and assign the boundary conditions. So for that we'll assign the material. So material is already assigned for the substrate. So we can assign the material for the ground plane as click on ground plane, right click, assign the boundary as perfect E, which will make that as a conductor. Then click on unassigned. There is one more patch is there. Click on patch, assign that as again conductor. So boundary as a perfect E. Then click on OK. Now you can check all the materials are assigned. So from this also we can check in boundaries. We can click on perfect E1. So that is a ground plane. Perfect E is what your patch, and here it is showing that FR4 epoxy means the substrate is assigned. Now what we do, we can give the input. So input will be given at this point. So we need to create one again rectangle. Create rectangle. Assign the coordinates as 0, 0, 0. Then X size. Now from the diagram we can see the X size. X size means this one. 8, and this is Y size. So let first we'll see how the rectangle is there. So I'll say OK. So rectangle आ गया है, मतलब ये वाला डायरेक्शन में नहीं चाहिए मुझे. I want rectangle to be यहाँ पे standing position में चाहिए. So I'll change the plane. I'll change it to Y. ओके, y में चेंज करने के बाद पता चल रहा है कि वो ये वाला प्लेन में है, लेकिन मुझे I want it in this plane. So again I will change it to x. So अभी आ जाएगा x प्लेन में. Now you can see ये वाला प्लेन में आ गया है. Now what I can do, I can click on this. First I will take all coordinates at this particular position, the rectangle at this side. So what I can do, I'll give the coordinate as sub x. तो ये यहाँ पे आ गया है. अभी मुझे इसके डायमेंशन देने हैं. y डायमेंशन में that is going to be in y direction it is fy, and in z direction height is h. So I'll click on OK. तो जो चाहिए मुझे डायमेंशन वो मिल गया है. अब क्या करना है, मुझे y डायरेक्शन में चेंज करना है उसको. So bracket sub y minus fy divided by 2. OK. Sorry, I think point is missing. Sub x comma. Hey, the error was the comma was missing, so that was the only error. So I'll click on rectangle. I'll magnify it. बहुत ज़्यादा अगर डिटेल्स में आपको नहीं समझ में आ रहा है, you can check my previous videos. उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया है. So यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है नहीं तो. Right? After magnifying it, what I can do, I can click on rectangle either from at this point
or you can click it here, right? Then right click, assign excitation, then click on lump port. So आपको ये वाला विंडो खुलेगा. तो ये फर्स्ट पोर्ट दैट वी आर गोइंग टू गिव विद 50 ओम, देन से नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन न्यू लाइन. तो ये एरो मिल जाएगा आपको. तो एक ट्रायंगल मिल रहा है. सो ऊपर वाला डायरेक्शन यहाँ पे क्लिक करो आप, तो ऊपर वाला एरो मिलेगा. सो गो टू द नेक्स्ट अपर लेवल एंड देन अगेन क्लिक. तो एंड देन इग्नोर दिस वन एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन फिनिश. तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने उसको एक्साइटेशन भी दे दिया है. सो एक्सपांड द एक्साइटेशन एंड यू कैन चेक द एक्सपांड इनपुट इज ऑल्सो गिवन. तो इनपुट इज गिवन. सो आई विल फिट करता हूँ स्ट्रक्चर को. अब क्या करना है, एक ही चीज बाकी है अभी इसमें, दैट इज व्हाट, this is what the practically not feasible to simulate here. So what we can create the practical environment for this. So we'll again draw the box, single click, second click, upper click, third one. So box is created. So create box. इसका डायमेंशन मैंने आपको बोला है लैम्बडा बाय 8 या लैम्बडा बाय 12 के बीच में उसका हर एक साइड से उसका डायमेंशन ज़्यादा होना चाहिए. सो ये वाला फिक्स डायमेंशन आप दे सकते हो -10 mm, -10 mm, -10 mm. तो ये दे दिया मैंने. एक्स साइज में सब x प्लस 20 mm दे दो, देन सब y प्लस 20 mm दे दो. 10 mm लेके आना है, तो मुझे इसको मैं 14 मल्टीप्लाइड बाय h करता हूँ. सो इट्स कम्स आउट नियर अबाउट 22 mm. मतलब 1.6 जाके ऊपर 10 नीचे 10 आपको मिल जाएगा. आई विल से ओके. लेकिन ये बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है. सो आई विल क्लिक ऑन बॉक्स, आई विल रीनेम इट एज एयर, आई विल असाइन द मटेरियल बाय द एडिटिंग इट. सो आई विल टाइप हियर एयर, एयर मिल जाएगा. क्लिक ऑन एयर, देन क्लिक ऑन ओके, then make it transparent by giving the value as 1, then say OK. तो अभी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर रेडी हो गया है. फिट टू ऑल करता हूं तो आपको दिखेगा. इफ आई रोटेट इट नाउ यू कैन सी द एयर इज देयर फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट. इसको और थोड़ा छोटा करता हूं चाहिए तो आपको दिखाने के लिए. यू कैन चेक द एयर इज देयर फ्रॉम ऑल द साइड्स. और ये जो लेंथ है ये लैम्बडा बाय 8 या लैम्बडा बाय 12 होना चाहिए. ऊपर नीचे भी एयर होना चाहिए. लैम्बडा बाय 8 लैम्बडा बाय 12 के डायमेंशंस में. तो चलो ये रेडी हो गया है. ये जो एयर है, एयर को हम लोगों ने रेडिएशन बाउंड्री देना है. सो आई क्लिक ऑन एयर, आई क्लिक ऑन असाइन रेडिएशन. सो रेडिएशन होने के बाद आई क्लिक ऑन ओके, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज we need to analyze or make the simulation setup ready. So click on analysis, add solution setup, then frequency ये 2.4 और 5 point something पे आ रहा है, तो I will solution frequency 2.4 करता हूँ. number of passes I will give 20, then I will click on OK. So setup ready है. उसको frequency sweep देना पड़ेगा. start and end frequency, add frequency sweep. I will start at 1 gigahertz and end at 10 gigahertz. I will give 200 steps. So here I will say it is linear count. I will give the steps as 200. I make this as in fast. I will display the steps. So you can see here all the 200 steps are there. Then I will say OK. Now I will click on validations checkup. So validation checkup, it is going to be validated. So my setup is ready. So I'll close it and then simply, first of all, I will save the project. I'll save this as आप जो भी देना है दे सकते हो नाम उसको. 2.4 करके देता हूं मैं. 2.4 गीगाहर्ट्ज. से ओके. तो आप देख सकते हो इसका नाम अभी यहाँ पे आया रहेगा. प्रोजेक्ट को नाम मिल गया 2.4 गीगाहर्ट्ज. आई विल से ओके, सेव, एंड देन आई विल क्लिक ऑन सिमुलेशन.
ना आप देख सकते हो सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको कितने पासेस और कितने रेडी होता है वहाँ पे दिखेगा आपको हाउ मेनी passes it is going to cover and how much time it will take. So accordingly you can manage your time. आप देख सकते हो सिमुलेशन खत्म हो गया है. Now it is ready to analyze the results. So we can just see the results. So to check the results I will click on result, right click, create modulation report. I'll click on rectangle plot, S parameter S11 and this one is in dB. I'll click on new report. So you can see the report is ready. So I will click on this marker first, this one second. So as per the paper the results are 2.45 and 5.26. So our results are 2.44 and this M2 is equal to 5.43. So the results are matching with the paper. So you can check the graph as well. The graph is also given. So this graph is what angular plot that I will show you in the next lecture, which is for the splitting resonator. So this is what the plot which they have shown. Right. So red color graph is going to match with our results. So we'll see another plot for VSWR. So click on the VSWR rectangle plot. Here we can put VSWR. This is none. Then say OK. Right. So you can have marker. If I click on this, it should be in between 1 and 2. The VSWR value is 1.18 and 1.10, which is acceptable and which is in between 1 and 2. For radiation, gain and current distribution, I'll create one more video for you. So till that, बने रहिए मेरे साथ. ये पैरामीटर्स मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है और फिर देखने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है. So इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा and that I will upload it for you. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. And do not forget to press the bell icon so you can get the notifications for the next videos that I upload for you. So HFSS सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ. Thank you very much for watching the video and giving your valuable time.